देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि G20 पर थोड़ी ही देर में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होने जा रही है। विदेश मंत्री, वित्त मंत्री की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। बड़े अधिकारी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद रहेंगे। तो G20 से जुड़ी ये ब्रेकिंग आप तक न्यूज इंडिया पहुंचा रहा है कि G20 पर बस थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होने जा रही है। और आपको बता दें कि इसमें विदेश मंत्री, वित्त मंत्री की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है और जो अभी तक सब कुछ हुआ है उसकी ब्रीफिंग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी। बड़े अधिकारी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे। तो बस थोड़ा इंतजार, G20 पर थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो होने वाली है और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होगी वो विदेश मंत्री, वित्त मंत्री की तरफ से होने वाली है। और इस वक्त की एक और बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा दें। आपको बता दें कि G20 डिक्लेरेशन पर मोहर जो है वो लग गई है। लीडर्स डिक्लेरेशन को स्वीकार किया गया है। जी हां, अहम खबर, बड़ी खबर, नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर सहमति बन गई है और पीएम मोदी ने बाकायदा खुद इसकी घोषणा की है और बताया कि G20 शिखर सम्मेलन का दरअसल ये दूसरा सत्र है और साथ ही साथ G20 में भारत को बड़ी कामयाबी जो है वो मिली है। और पीएम मोदी खुद तारीफ करते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि हमारी टीम ने कड़ी मेहनत की है और जो हमारी टीम ने कड़ी मेहनत की थी वो हमारी टीम की मेहनत रंग लेकर आई है। तो नई दिल्ली साझा घोषणा पत्र जो है वो जारी होगा। आपको बता दें कि G20 में भारत को बड़ी कामयाबी ये मिली है। प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान कर दिया है G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा सत्र। G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा सत्र, अहम खबर। तो G20 से जुड़ी एक और बड़ी ब्रेकिंग आपकी टीवी स्क्रीन पर कि G20 में भारत को एक बड़ी कामयाबी मिली है कि G20 डिक्लेरेशन पर मोहर जो है वो लग गई है। लीडर्स डिक्लेरेशन को स्वीकार किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इस बात का ऐलान किया है और साथ ही साथ अपनी टीम की मेहनत का जिक्र करना भी देश के प्रधानमंत्री नहीं भूले, क्योंकि इतने लंबे वक्त से लगातार G20 जब भारत को मेजबानी मिली तभी से लगा हुआ था तमाम कार्यक्रमों को बेहतर से बेहतर करने में, अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस भारत की तरफ से देने में। और उसी को लेकर आज उस टीम का शुक्रिया अदा करना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं भूले और उस टीम का जिक्र किया जिस टीम ने कड़ी मेहनत की है। मेरा प्रस्ताव है कि इस लीडर्स डिक्लेरेशन को भी एडप्ट किया जाए। मैं इस डिक्लेरेशन को एडप्ट करने की घोषणा करता हूं। इस अवसर पर मैं हमारे मंत्रीगण, शेरपा और सभी अधिकारियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने अथाक परिश्रम करके इसे सार्थक किया है और इसलिए वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। लीडर्स डिक्लेरेशन को स्वीकार किया गया है। आपको बता दें कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान किया है। तो देखिए, जो तस्वीर आ रही है वो अपने आप में बेहद खूबसूरत आ रही है, क्योंकि कभी तस्वीर आती है किसी से हाथ मिलाते हुए, तो कभी आती है किसी को गले लगाते हुए। G20 के मेहमानों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी तरीके से, इसी जेस्चर्स के साथ मुलाकात जो है वो कर रहे हैं और अब इंतजार है बस थोड़ी ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का, क्योंकि कई बड़े अधिकारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि G20 पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए भी अहम हो जाती है कि अभी तक क्या क्या हुआ है, कैसे हुआ है, पूरी ब्रीफिंग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाएगी। विदेश मंत्री इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा होंगे, बड़े अधिकारी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। सबका साथ की भावना से ही भारत ने प्रस्ताव रखा था कि अफ्रीकन यूनियन को G20 की स्थायी सदस्यता दी जाए। मेरा विश्वास है कि इस प्रस्ताव पर हम सबकी सहमति है। आप सबकी सहमति से आगे की कार्रवाई शुरू करने से पहले मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं।
एक्सेलेंसी, भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश के भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई है। भारत में ये पीपल्स G20 बन गया। करोड़ों भारतीय इससे जुड़े। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। तो पीएम मोदी के नेतृत्व को दुनिया इस वक्त सलाम कर रही है। यहाँ पर देखिए किस तरह से अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी और साथ ही साथ सऊदी अरब हो, ब्राजील हो, इटली हो, चीन हो, सबकी तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेशी मेहमानों का स्वागत किया है। पीएम ने बहुत ही गर्मजोशी के साथ विश्व के मेहमानों का अभिनंदन किया है। तो तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं कि देखिए इन तस्वीरों में कैसे पीएम मोदी ने और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की जब मुलाकात हुई तो काफी गर्मजोशी जो थी वो उसमें नजर आती है। बाइडेन और पीएम मोदी इस दौरान एक दूसरे के गले भी मिले और वहीं जब ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और पीएम मोदी की मुलाकात हुई तो वो भी बहुत अच्छी रही। दोनों वर्ल्ड लीडर इस दौरान गले लगे। मुलाकात के दौरान दोनों काफी हंसते हुए भी नजर आए। इस दौरान दोनों नेताओं ने काफी बातचीत भी की। इसके अलावा G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी का भी जोरदार स्वागत करते हुए नजर आए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और साथ ही साथ कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और साथ ही साथ फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो भी देखिए कितनी गर्मजोशी के साथ मिलते हुए नजर आए। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडीज और ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा, चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग, इटली के प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी और साथ ही साथ साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा और तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। इन तस्वीरों में आप देखिए कितनी गर्मजोशी के साथ वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर ये जो थीम है इसके तहत ये मुलाकात काफी गर्मजोशी के साथ किसी के गले मिलते हुए कभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए, किसी से हाथ मिलाते हुए नजर आए और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार लोगों का स्वागत कर रहे हैं, मुलाकात के दौरान हंसते हुए दिख रहे हैं, गर्मजोशी दिख रही है, वो अपने आप में बहुत कुछ कह रही है। और पीएम मोदी भारत मंडपम के वेलकम स्पेस में लगातार मौजूद हैं और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति जब श्री रामाफोसा से जब वो मिले तो वहां पर भी किस तरीके से स्वागत किया पीएम मोदी ने और हर जगह एक मुस्कान जो है तमाम बड़े लीडर्स के चेहरे पर वो नजर आ रही है। तो बारी बारी से तमाम तस्वीरें आपको हमने दिखाई कि कैसे लगातार भारत मंडपम में जारी G20 की बैठक में पीएम मोदी साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट यून सुक योल से भी मिले। तो तस्वीरें तमाम उन लोगों की जब ये लोग पहुंचे, पीएम मोदी ने गर्मजोशी के साथ भारत मंडपम में जारी G20 की बैठक में इन तमाम लोगों का स्वागत किया। किसी से हाथ मिलाते हुए तस्वीरें आई, किसी के गले मिलते हुए तस्वीरें नजर आई। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब एर्दोगान का भी प्रधानमंत्री मोदी ने G20 समिट के दौरान भारत मंडपम में स्वागत किया। वेलकम स्पेस में दोनों नेताओं की ये मुलाकात हुई है। तो बेहद खास आज का दिन क्योंकि बारी बारी से तमाम दिग्गज, तमाम नेताओं की तस्वीरें जो है वो सामने आ रही हैं। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी दीपक चौबे का और दीपक से समझने की कोशिश करेंगे। दीपक, आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। जिस तरीके से हम यहाँ से जो तस्वीरें देख पा रहे हैं वो बेहद खूबसूरत है, लेकिन आप वहां पर हैं, ये जो महामंथन हो रहा है, कितना बड़ा मैसेज बाकी और कंट्रीज को जाएगा भारत की तरफ से? बिल्कुल निदा जी, और एक ये मैसेज है कि उभरता हुआ भारत और भारत 2023-24 का भारत है। और जाहिर सी बात है जिस तरीके से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनका स्वागत किया, तो जाहिर सी बात है ये दिखता है। और कहीं ना कहीं 2-3 जो देश हैं, खासकर अगर बात की जाए तो चीन और पाकिस्तान, उनको भी एक मैसेज जाता है कि देखिए भारत आज के टाइम पर कहाँ खड़ा है। अगर आपको विश्व पटल पर अगर आपको कहीं दिखना है तो भारत के साथ कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा, भारत के साथ आपको व्यापार करना पड़ेगा। और देखिए चीन लगातार, जैसे कि कर देखा गया कि दीपावली में जब भी अगर चीन का बहिष्कार होता है तो उसकी जीडीपी घट जाती है। हालांकि हम आज की बात करें तो हम 5वें स्थान पे जीडीपी में हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि वो तीसरे स्थान पर आना चाहते हैं। तो इकोनॉमिक के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जिस तरीके से जो लगातार
प्रधानमंत्री ने जो 51 देशों का जो समूह था, दक्षिण अफ्रीका जो अफ्रीका वाला था, उनको जो शामिल किया, उसके बाद वो भी सिर्फ और सिर्फ भारत की धरती पर नई दिल्ली में, उसमें भी एक बहुत बड़ी कूटनीतिक अगर कहा जाए तो कामयाबी मिली है, क्योंकि ये कूटनीतिक जो कामयाबी मिली है उसका कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल उसका असर दिखेगा कि भारत की जो विश्व पटल पे जो छवि दिखाने की कोशिश की जा रही है वो छवि दिखेगी कि किस तरीके से उसने नई दिल्ली में जब ये G20 की बैठक हो रही थी तो उसने अपना बहुमत करके और प्रस्ताव रखा, उसके बाद उस प्रस्ताव को पास भी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश है। और जिस तरीके से बाकी जो लोग जो अगर जिस तरीके से अगर बात की जाए तो पहले 19 देश थे, अब वो 20 माफ़ी चाहता हूँ, पहले 19 थे अब 21 हो गए हैं। यानी कि कहीं ना कहीं एक मैसेज है कि भारत बहुत मजबूत है और भारत के साथ सहयोग बहुत ज़रूरत है। और ये कहीं ना कहीं अमेरिका को पता था, इसलिए देखिए जब शी जिनपिंग का आना मतलब मना हुआ, उसके बाद व्लादिमीर पुतिन नहीं आ रहे थे, उन्होंने अपना अगर बात की जाए तो वहाँ के प्रधानमंत्री आ रहे थे, तो खुद जो बाइडन यहाँ दिल्ली पहुँचते हैं, उसके बाद वो सीधा प्रधानमंत्री आवास पहुँचते हैं, प्रधानमंत्री के साथ गर्मजोशी से मुलाकात होती है। उसके बाद एक वर्ल्ड में एक मैसेज जाता है कि भारत और अमेरिका के जो रिश्ते हैं वो बहुत नज़दीक आ रहे हैं। यानी कि दोनों देशों की अगर बात की जाए तो नीति जो है वो साफ दिखती है। जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए तो ड्रोन की हो रही कि ड्रोन या फिर और नए जो तकनीक के जो लड़ाकू विमान हैं उसके लिए डील हो रही है, तो आने वाले भविष्य में इसका जाहिर सी बात है कि भारत को फ़ायदा पहुंचेगा निदा। और जिस तरीके से ये बैठक जो हो रही है बहुत महत्वपूर्ण है, 2 दिन की ये बैठक है और देखिए इसके बाद रात को डिनर भी है, तो बहुत सारी कुल मिलाकर के दीपक कहा जा सकता है, दीपक कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि महान शक्ति के रूप में स्थिति मजबूत और ज्यादा भारत अपनी कर सकता है इस समिट के बाद। बिल्कुल। और देखिए साउथ चाइना लगातार जो चीन की विस्तार नीति है उसको भी एक धक्का मिलेगा, जिस तरीके से लगातार भारत जो मेज़बानी कर रहा है, और दिखेगा कि किस तरीके से भारत आज कूटनीतिक के मामले में या फिर अगर बात की जाए तो जीडीपी के मामले में वो लगातार उभरता जा रहा है। देखिए जहाँ चीन की जीडीपी एक तरफ घटती है वहीं भारत की जीडीपी जो है वो ऊपर बढ़ती है। यानी कि कहीं ना कहीं उसको लगता है कि भारत के साथ अगर हम काम करते हैं तो उसको भी एक फ़ायदा मिलेगा। और ये एक विश्व पटल पर जाहिर सी बात है कि मैसेज देने की भी कोशिश की जाएगी कि भारत कमज़ोर नहीं है। भारत के साथ अब जो बाकी जो देश है उनको मजबूरी होगी कि भारत के साथ काम करना है। निदा बिल्कुल। और ये हमारे लिए अगर हम देखें तो व्यापारिक तौर पर भी, आर्थिक तौर पर भी और क्या कहते हैं साथ ही साथ अगर हम देखें रोजगार के अवसर के तौर पर भी एक बहुत बड़ी पहल भारत के लिए हो सकती है, क्योंकि अब सामने से पहल की जाएगी। भारत में हर कोई आना चाहेगा, इन्वेस्ट करना चाहेगा, अपना पैसा लगाना चाहेगा। बिल्कुल। और देखिए लगातार इस तरीके के मतलब जो भारत में अगर बात की जाए तो एफडीआई के थ्रू जो अगर विस्तार की बात की जाए, एफडीआई के थ्रू जो लगातार जो बाहर की कंपनियां हैं वो आ रही हैं, तो जाहिर सी बात है उससे एक भारतवासियों को भी एक मौका मिलेगा। उसके बाद रोजगार बढ़ेगा, जब रोजगार बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। तो ये चाहते हैं। देखिए जिस तरीके से सैमसंग का प्लांट आया, उसके बाद कई ऐसी कंपनियां थी जो चीन में थी वो अब भारत की ओर रुख कर रही हैं। यहाँ तक कि अगर बात की जाए तो चीन से जो सटा जो देश है वियतनाम, वो पहला देश था जहाँ पे चिप बनती थी, पर वो लगातार भारत के साथ अच्छे रिश्ते चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि चीन जिस तरीके से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको पता है कि भारत ही उसके साथ खड़ा रहेगा तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि उसको कोई ठेस पहुंचा सके। तो जिस तरीके से बाकी जो बाहर की कंपनियां, विदेशी कंपनियां जो भारत में आ रही हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण होगा कि भारत की जीडीपी ग्रोथ होगा, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होगी तो वो बढ़ेगा। तो ये बहुत सारी चीज़ें जिसको लेकर प्रधानमंत्री जब विपक्षी वार्ता कर रहे हैं तो उनके साथ जो राष्ट्राध्यक्ष आए हैं उनसे वो कह रहे हैं कि और भी कंपनियां आनी चाहिए। और देखिए लगातार जो बैठक कर रहे हैं ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि दुनिया की जो टॉप मोस्ट कंपनी है वो भारत आए और अपना रोजगार बढ़ाए। जिस तरह के दूसरा सत्र वन फैमिली, दूसरे सत्र के समापन के बाद वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो अपने होटल चले जाएंगे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कही जा रही थी और 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। अभी कितना और समय लग सकता है दीपक, कोई इस बारे में जानकारी?
जी देखिए, अगर बात की जाए तो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में आपसे थोड़ी देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और आज की अगर बात की जाए तो आज की जो बैठक है उसके बारे में बताया जाएगा कि आज की बैठक में क्या क्या हुआ, जिन देशों के साथ प्रधानमंत्री ने द्विपक्षीय बैठक की उसमें क्या क्या नतीजा निकला, ये सारी चीज़ें उसमें बताई जाएगी। तो बस अब इंतजार है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी और उसके बाद फिर बताया जाएगा कि किन किन नीतियों पर बैठक हुई है और आगे की अगर कल की बात की जाए तो कल के बैठक का क्या एजेंडा रहेगा। दीपक, ऐसा तो नहीं है क्योंकि 3:30 से और 4:45 तक दरअसल दूसरे सत्र का वन फैमिली का ये जो वक्त था वो मुकर्रर किया गया था पूरे शेड्यूल के मुताबिक। तो ऐसा तो नहीं कि दूसरे सत्र के समापन के बाद जब तमाम वर्ल्ड लीडर्स जो हैं वो अपने अपने होटल चले जाएंगे तो फिर उसके बाद क्या थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का? जी देखिए, अगर बात की जाए तो क्योंकि 7:30 से 8 बजे के बाद अगर बात हो सकता है कि कभी कर दें, पर क्योंकि अगर बात की जाए तो 7 से 8 के बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ जो डिनर की मेजबानी है वो होगी। उसके बाद 8 से 9:15 तक डिनर के बाद नेताओं के साथ जो बैठक होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि अगर टाइम स्लॉट पूरा दिया हुआ है उसके बाद 8 से 9:15 तक बातचीत होगी। उसमें कई केंद्रीय मंत्री कहा जाए भारत सरकार के वो मौजूद रहेंगे। यहाँ तक कि देखिए, सुरक्षा के दृष्टि से अगर देखा जाए तो पहले जो केंद्र मंत्री हैं वो राष्ट्रपति भवन पहुंचेंगे, वहां से फिर एक बस जो है उनको भारत मंडपम छोड़ेगी। उसके बाद उसी बस में वो लोग फिर वहां जाएंगे। उसके बाद वो लोग जहां अपने गतिमान स्थान पर जाना होगा वहां जाएंगे। तो ये पूरा प्रोसेसर है। और उसके बाद देखिए, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक है। इस अगर बात की जाए भारत मंडपम में तो जो स्टॉल लगाए गए हैं उनमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी जाएंगे। और जो राज्यों की जो अगर बात की जाए तो विशेषताएं जो बनती है, चाहे राजस्थान की जो मशहूर जो चूड़ी है वो उसकी बात की जाए या फिर भदोही का कालीन हो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़ की बात की ली जाए तो ये सब मुख्यमंत्री पहुंचेंगे और सभी अगर बात की जाए तो जो सभी मुख्यमंत्री हैं वो उस टाइम पहुंच जाएंगे। और क्योंकि अगर बात की जाए तो सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। हालांकि एक चीज़ और भी है कि लगातार एक बयानबाजी भी चल रही है कि विपक्ष के जो नेता है मल्लिकार्जुन खड़गे उनको डिनर में नहीं बुलाया गया है। तो इस पर भी खूब चर्चा हो रही है। हालांकि अगर बात की जाए तो देखिए निदा, बीजेपी जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसके भी राष्ट्रीय अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया है और ऐसा हमेशा होता रहता है। बिल्कुल, लेकिन और यही वजह है विपक्ष इसको आधार भी बना रहा है। दीपक साफ साफ कह रहा है कि अगर G20 जैसा कार्यक्रम करा भी रहे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। मतलब आज हमारा कद इतना ऊंचा है कि G20 की हम मेजबानी कर रहे हैं और तमाम बाहर के जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं, लीडर्स हैं, वो हमारी भारत की सरजमी पर मौजूद हैं और हम ये कह रहे हैं कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। अगर आपको तारीफ नहीं करनी है तो आप बुराई भी मत कीजिए। कम से कम कुछ अच्छा हो रहा है अपनी कंट्री के लिए, अपने देश के लिए, अपने भारत के लिए, तो आप साथ तो दीजिए, तारीफ तो कीजिए। बिल्कुल। और देखिए, यही वो दिल्ली है कि जब इसी दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे और पूरी दिल्ली सज गई थी। पूरी दिल्ली में अगर बात की जाए तो अलग अलग रोडों पे लाइनें लगा दी गई थी कि पीली लाइन के बीच में सिर्फ और सिर्फ खिलाड़ियों को आने दिया जाएगा। पर कहीं ना कहीं जब ये G20 बैठक हो रही है तो इससे भारत का रुतबा भी बढ़ता है। और दिल्ली वालों के लिए जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो आते हैं फ्रांस से, उसके बाद वो साफ कहते हैं कि दिल्ली वाले तैयार रहें दिल्ली के मेहमानों की नवाजी के लिए। उसके बाद वो माफ़ी भी मांगते हैं कि दिल्ली की जनता से मैं माफ़ी चाहता हूं कि उनको परेशानी झेलनी पड़ रही है। पर दिल्ली वालों ने आज तक नहीं। हालांकि देखिए, एक मतलब हादसा मैं आपको बताता हूँ कि कल जब मैं जा रहा था तो मेट्रो में तो लोग कह रहे थे कि कोई बात नहीं, अगर दिल्ली बंद हो गई तो क्या। कहीं ना कहीं पर इसका मैसेज जो है वो वर्ल्ड पे जाता है कि भारत इतनी बड़ी बैठक कर रहा है। तो लोगों में भी इसके लिए बहुत उत्साह था कि जिस तरीके से दिल्ली पूरी सजा दी गई है। आपने देखा होगा, आप खुद ग्राउंड पे भी। दीपक, मैं आपको रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है G20 से जुड़ी, वो खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा दे। तो G20 से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि भारत की अध्यक्षता G20 इतिहास में सबसे महत्वाकांक्षी है और मूल्य कार्य को दुगने से भी अधिक किया गया है। जी हाँ, पिछले राष्ट्रपतियों की तुलना में जो इसके नतीजा है, निकलकर जो परिणाम आए हैं वो 2 से 4 गुना ज्यादा रहे हैं। जी हाँ, G20 परिणामों पर भारत का प्रभाव सीधा पड़ेगा और किस किस पर पड़ा है। दरअसल खाद्य सुरक्षा और पोषण पर डेक्कन उच्च स्तरीय सिद्धांत और साथ ही साथ इसके अलावा आपको बता दें कि G20 से ये बड़ी खबर अहम जुड़ी हुई, नीली महासागरीय अर्थव्यवस्था के लिए चयनित उच्च स्तरीय सिद्धांत तो भारत की अध्यक्षता G20 में सबसे महत्वाकांक्षी जो है वो साबित हो रही है। क्यों साबित हो रही है, ये भी तमाम पॉइंट के जरिए आपको यहाँ पर समझाने की हम कोशिश करें। देखिए वो तमाम पॉइंट्स यहाँ पर, उसके एक कागज आप देखिए यहाँ पर जिस पे सब कुछ एक साथ लिखा हुआ है कि आखिर भारत के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि हो जाती है।
and we share one future. This draws the entire proceedings of the New Delhi summit are in fact organized accordingly, with 3 sessions devoted to each aspect of this theme. Now, reflecting this approach, we have consciously sought to make this G20 as inclusive and broad-based as possible. It is witnessing the participation of its 20 member states, 9 invitee nations, and 14 international organizations. It is a matter of particular satisfaction for us that the African Union has this morning become a permanent member of the G20, that too during the Indian presidency. This is in keeping with the priority that we attach to addressing the urgent concerns of the Global South. You would recall that at the beginning of our presidency, at Prime Minister Modi's initiative, 125 nations were consulted to express the voice of the Global South. In terms of its organization and program, the Indian presidency, if I may say so, has been exceptional. Events have been spread across 60 cities, which are truly across the length and breadth of India. There has been a popular participation and a societal involvement of an extraordinary degree. The interest in G20 proceedings have been particularly strong among our youth. It has been an opportunity to showcase our culture, traditions, and heritage as well. The G20 has contributed to making India world ready and the world India ready. The declaration that the leaders have agreed on today focuses on promoting strong, sustainable, balanced, and inclusive growth. It seeks to accelerate progress on SDGs and has come up with an action plan accordingly. It envisages a green development pact for a sustainable future. It endorses high-level principles on lifestyle for sustainable development, voluntary principles on hydrogen, the Chennai principles for a sustainable and resilient blue economy, and the Deccan principles on food security and nutrition, among others. The transformative and inclusive role of technology has been highlighted with a focus on digital public infrastructure. The Indian presidency's proposal of a One Future Alliance has also been noted. The G20 has reaffirmed the fundamental importance of gender equality and committed to halve the digital gender gap by 2030. Recognizing that the post-pandemic world order must necessarily be different from the world before it, the leaders have also emphasized the need to reinvigorate multilateralism and reform international financial institutions. This is particularly relevant to managing global debt vulnerabilities. So, as you can see, there have been many far-reaching and very consequential policies and decisions that have been agreed upon today. Keeping all that in mind, I would, at this stage, request Finance Minister to highlight the key issues from the finance track. Thank you, Jaishankarji. As was said by the External Affairs Minister, under the guidance of Honorable Prime Minister, India's G20 presidency has worked for the theme One Earth, One Family, One Future. So today we are in a position to adopt, through the finance track, people-centric, action-oriented and far-sighted approach, and as a result of which several outcomes of the finance track will certainly reflect these objectives with which we started the negotiations. It has been very clear in our mind that we should ensure that no one is left behind
in our pursuit of global solutions. So we have endeavored to support countries, especially those from the global south, to be an integral part of the global decision-making process. The G20, as you all know, is a very diverse group. Each country is at different milestones of economic development, and their trajectory is also very different in achieving their developmental goals. So through well-curated debates and careful assimilation of all the perspectives, the Indian presidency has crafted solutions that resonate with each member, offering a shared path forward for all. Many action-oriented outcomes of this presidency contain comprehensive strategies that cater to the unique needs and aspirations of all developing nations. We assumed the presidency at a challenging time of geopolitical tension. The Indian presidency has worked to ensure that these divergences don't overshadow the core developmental outcomes or concerns of the global community that demand collaborative solutions. So today, as I look back at the 10 months of Indian presidency, I am left with gratitude and satisfaction. I can confidently state that the Indian G20 presidency has walked the talk. Now, let me share with you just some of the key achievements of the Indian presidency, the finance track. First one is the outcomes which are focused on strengthening the MDBs to address shared global challenges of the 21st century. So under this strengthening MDBs, there are 4 key highlights that I'd like to bring to your notice. The first one is agreement on the need for a better, bigger, and more effective MDBs. It is so necessary to have better, bigger, and more effective MDBs because the developmental demands from all across the globe is so high, these institutions will have to be better and bigger. This is also going to contribute to enhancing representation and voice of developing countries in the decision making. The second under the MDBs, strengthening of MDBs, is the G20 Independent Expert Group on strengthening MDBs, and this was established and it has submitted its volume 1. The first report, their report consists of 2 volumes. The first volume has already been submitted. The report recommends a triple agenda that dovetails with the call for the bigger, better, and more effective MDBs. The third point in strengthening MDBs is the agreement to collectively work towards boosting World Bank's financing capacity. Here the options will be explored that will deliver a powerful boost to the IBRD headroom to support low-income and middle-income countries. And the fourth, endorsement for the G20 roadmap for implementation of the recommendations of an independent panel on capital adequacy framework of the MDBs. So the CAF recommendations are focused on enabling MDBs to use their existing resources effectively. The roadmap estimates, this is going to be of interest for the media, the roadmap estimates that implementation of the CAF and the measures thereby will potentially yield additional lending headroom of approximately $200 billion over the next decade. So through these achievements, India has harnessed the opportunity provided by the G20 presidency to effectively articulate and embed the priorities of the global south in the larger global conversation on the MDB reforms. I move to the second, laying the building blocks for a globally coordinated and comprehensive policy and regulatory framework for crypto assets. The global push for clear policies on crypto assets has gained momentum under the Indian presidency, and a global consensus is emerging on the same. The presidency will support the IMF and the
and FSB is also setting the contours of the regulatory framework for a globally coordinated approach to crypto assets. So the presidency, with the support of IMF and the FSB, is setting these contours. The IMF and FSB synthesis paper, about which I've spoken to the media earlier, including a roadmap. On that, I just want to give my observation. This synthesis paper delves into how the policy and regulatory frameworks developed by the IMF and the FSB, alongside the other standard-setting bodies, will fit together and interact with each other. This paper is now available in the public domain for all of you all to see. The third one, which I'd like to draw your attention to, is the financial inclusion and productivity gains through digital public infrastructure. India, as you all are aware, through the India Stack, became the first country to develop all three foundational DPIs: the digital identity, the real-time fast payment, and a platform to safely share personal data without compromising privacy. So embedded this concept in the G20 financial inclusion agenda by formulating G20 policy recommendations for advancing financial inclusion and productivity gains through digital public infrastructure. This set of recommendations cover 5 aspects: use of DPIs and accelerating financial inclusion, fostering well-designed DPIs, regulatory and supervisory aspects of DPI, institutional and governance arrangements by DPI, and ensuring customer protection. So DPI has also been integrated into the G20 Financial Inclusion Action Plan, the FIAP, which will run between 2024 and 2026. That's a strong legacy of the Indian presidency. We also assume the co-chair of the Global Partnership for Financial Inclusion. The implementation of the Financial Inclusion Action Plan, as well as the policy recommendations on DPI, will remain as areas that will continue to be heard across the G20 forum. So, the fourth one, which I'd like to highlight, is the debt resolution under the common framework and also beyond the common framework. Since its establishment in 2021, only Chad as a country has had its debt restructured. The others have been waiting. So since India took over the G20 presidency, good progress has been made in the ongoing country cases under the common framework of debt treatment, and the 3 countries in that are Zambia, Ghana, and Ethiopia. We've also succeeded in using the G20 platform to also put in place a coordinated mechanism to address the debt situation of Sri Lanka, which is outside of the common framework. So G20 will continue discussing the policy-related issues linked to the implementation of the common framework and make periodically such appropriate recommendations. The launch of the Global Sovereign Debt Roundtable, which is co-chaired by IMF, the World Bank, and also the G20 presidency, to enhance the conversation among the various stakeholders and address current shortcomings in the debt restructuring process. That has now become an institution which is actually acting as a catalytic agent in getting resolutions done faster. The fifth point under the finance track, which I'd like to bring to your notice, is the financing of cities of tomorrow. Key concerns of the low-income countries and emerging markets is always been to mobilize resources for financing sustainable, resilient, and also inclusive cities of tomorrow. The G20 principles, which are issued for financing cities of tomorrow to promote effective and efficient use of financial resources, to support urban development that is socially inclusive
environmentally responsible and economically sustainable are now all under the framework of the principles which have been used. The MDBs and the development financial institutions can use these principles in their financing plans for urban infrastructure. The sixth, which I'd like to quickly draw your attention, is the two-pillar solution on global taxation, the international taxation. We've made substantial progress in the two-pillar solution, and the work has also happened on the exchange of information on immovable property transactions between countries. There is a launch of the pilot program of the South Asia Academy in India for tax and financial crime investigation in collaboration with the OECD. The seventh, on which I'll elaborate, is mechanism to support the timely and adequate mobilization of resources for climate finance. Till date, the conversation was focused on calling on developed countries to say, where is that $100 billion US dollars, which didn't come. But Indian presidency adopted an action-oriented approach, and the G20 explored mechanisms that can support timely and adequate mobilization of resources for climate finance, facilitating access to multilateral climate funds and enhancing their leverage and ability to mobilize private capital has also been our focus. Special focus again on development, demonstration, deployment of green and low carbon technologies. Now the list of outcomes, I've pointed out 7, just 3 more which I'll not go into the detail, but you can take it as enough has been done on that. I'll also put it out for your consideration. Scaling up sustainable finance for social sectors, health and education. Technical assistance for capacity building. Then global conversation on transition policies, especially to include range of options, both on pricing and non-pricing. And the third one, enhancing finance health collaboration so as to cover many other work streams as well. So I listed out 7, elaborated on them, 3 others which have not elaborated, but on all of them, substantial progress and outcomes have been achieved. India's received tremendous support from the G20 members across the table. The outcomes of the Indian presidency are a testimony to India's commitment to multilateralism and for international cooperation. We assure the upcoming Brazilian presidency of our strong support and to continue the momentum on key issues of global importance. I now hand over back to Minister Jaishankar. Thank you, Nirmala ji. May I now request G20 Sherpa Amitabh Kant to bring out the major outcomes from the Sherpa track. Thank you, Minister. So first of all, when we started India's presidency, the Prime Minister had said that India's presidency must be inclusive, it must be decisive, it must be ambitious, and it must be action-oriented. The New Delhi Leaders' Declaration has 83 paras in all. All 83 paras have 100% consensus across all countries. There are 8 paras on the geopolitical issue, which is entitled Planet, People, Peace and Prosperity. All those 8 paras have 100% acceptance. All countries have unanimously supported the New Delhi Leaders' Declaration. This is one declaration without a single footnote and without any chair's summary. This is a complete statement with 100% unanimity. This demonstrates both the Prime Minister's and India's great ability to bring all developing countries, all emerging markets, all developed countries, China, Russia, everybody together on the same table and bring consensus. Secondly, this has been the most ambitious
presidency in G20's history ever, because the number of outcomes it has, both the outcomes and the annexed documents are about 112, which is more than 2.5 times which has ever been achieved before. Thirdly, this presidency, if you go through the New Delhi Leaders' Declaration, it has a huge India narrative, it has a huge India footprint, whether you look at the Deccan high-level principles on food security, whether you look at the Chennai high-level principles for blue ocean economy, whether you look at the Goa roadmap for tourism, whether you look at the Gandhinagar implementation roadmap for land restoration, or Jaipur call for enhanced MSMEs, all this will leave a huge footprint of India in G20. So one of the key achievements to my mind, one is that we've achieved a very major green development pact in today's world of climate action and climate finance. Every single country has come together to focus on green development pact, which has financing, which has focused on global greenhouse gas emission by 43% by 2030, which has a doubling provision of adaptive finance by 2025, which has a global biofuel alliance, which has completely new principles of life for sustainable development, which has ending plastic pollution, which has reducing disaster risk, and a whole lot of other components put together as the Green Development Pact of the leaders of G20 countries for a greener world of tomorrow. Secondly, there is a huge focus on accelerating progress on sustainable development goals, because the COVID had hit a vast segment of our population. There's a G20 action plan to accelerate progress on SDGs. There is a huge focus on education, health, nutrition. There's a huge focus on creative industries like culture as a transformation for SDGs. And there is a huge focus on inclusive and resilient growth in this entire things.